Allah his own queen in different form as a celestial monk named Kumbha Muni. Siddhas entered into Nirvikalpa Samadhi, means to that absolute state of equilibrium where mind doesn't have any existence at all, no mind, no prana, nothing. That stand-still position is known as Nirvikalpa Samadhi, where one enjoys the highest bliss and understands the reality behind all these creations. Siddhas the king attained that state by the help of Kumbha Muni as his guru. Chudala the queen in the form of Kumbha Muni wanted to test the mental condition of the king, whether he is well established in that state or not, after disturbing him from the samadhi, bringing him down to the mental level. Kumbha Muni, the disguised Chudala, is testing the mind of Siddhas. Chudala was ruling over the kingdom in absence of the king by her yogic power, and at the same time she was guiding her husband, the king, in the forest, away from the kingdom, in the form of a celestial monk named Kumbha. We have seen yesterday that Kumbha Muni is playing a drama, pretending something has happened. Kumbha Muni told that he was coming from the meeting of the gods, and from where his father was present, and he was coming back after the meeting was over, and in the way a great monk was hurrying for Sandhya Vandan, his
rituals at evening time. And Kuma Muni saw him in the way, and he cracked a joke towards the great saint. As a result, the saint cursed him. This was told to King Sikhidhwaj. そこで熊宗つまり王妃は王を試してみたいと思って、一つのねお芝居をしてきました。つまり自分は天の王様の天の父のところに集まりがあるので出かけていく。そしてその出かけていったその帰り道で、とある聖人をちょっとからかってしまった。ジョークを言ってしまった。そしてその聖人から呪いを受けてしまったという話を王に伝えたのです。By the force of curse of that great saint, Kuma Muni expressed that she will turn to a female body at night, and that happened. そしてその呪いによって彼つまり熊宗は夜の間は女性の体にならなければならなくなったというのです。It was just a drama. Really, Chudala took the original female form, and she was testing the king, and she told, "O king, why not we marry each other, and as a lady I want some friend, so we can marry ourselves, and according to the injunctions of the scriptures we can marry, and we can at daytime I will be Kumbha Muni, at night I will be your wife. In this way we can pass the time. What harm is there?" So the king agreed without any complaint, objection. そして熊宗、そして王妃なんですが、このように言いました。私は夜の間は女性になっていますから、あなたと結婚したいと思います。夜の間は夫婦として過ごし、そして昼は私は熊宗に戻りますから、男性としてあなたの友として過ごす。そこに何の問題があるでしょうかと王に伝えました。王はそれに何の反対もしませんでした。After both agreed, they collected all sorts of flowers and leaves and fruits, etc. from the jungle and made ready for marriage ceremony at night. It was full moon night of the month Shravan. そしてその夜は満月の吉兆の日でしたので、王と熊宗、つまり王妃は結婚式のための準備をいろいろしました。They were ready for marriage. そして結婚の準備が整いました。Now we shall see. ここからが今日のところです。अनंतर वहाँ पर स्नान किए उन दोनों ने देवता, पितर और ऋषियों की पूजा की। ज्ञानी होते हुए भी उनकी पूजा में प्रवृत्ति इसीलिए हुई कि वे जैसे क्रियाजनित फलों में अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रिया फलों के त्याग में भी अनिच्छा रखते थे। They
started worshipping all the rishis and the monks of the mountains and all the gods, though they were higher beings, they both of them, they were realized souls. Even then, they had no objection to do anything. That's why they had no objection to worship also, just as before, just as ignorant persons do for selfish motive, so also the knowledgeable people do without any motive. They do similarly. There is no difference outwardly. Only thing, the worldly people have some desires to get to enjoy the result, whereas the great people of self-realization, they don't have any motive behind doing anything, but they act similarly. そして王と王妃は山の聖人や神々に祈りを捧げ始めました。普通の人たち、あるいは無知な人たちも祈りを神や聖人に祈りを捧げますが、それは何か見返りを求めたり何かを求めての祈りという場合が多いのですが、このように高みに登られた方たちでも同じように神や聖人に祈りを捧げます。でもそれは、無知な人たちが何かを求めてする祈りとは違い、純粋なる祈りであります。So, even if there was no need of doing all these rituals, yet they did it because to set an example before others, or both the things, to set an example before others, before the worldly people, and also they have no objection for anything. That's why they did all these rituals of marriage ceremony. 彼らはきちんと結婚式の形式を踏んで式を挙げました。それは普通の人々に対してきちんとした規範であると、規範を示すという意味がありましたし、彼らにとってそういうことをする必要はなくてもですね、そういったことをすることに対して別に否定的な気持ちも何もなかったので、全てをきちんと全て結婚式の形態、結婚のお祝いの形態を守って結婚式を挙げました。यद्यपि वे शाश्वत आत्मज्ञान रूपी रस से पूरी तरह तृप्त थे, तथापि इस जगत स्थिति की व्यवस्था के लिए उन्होंने सिद्धि के प्रभाव से निर्मित अन्न आदि का भव्य भोजन किया। Those both were realized souls, they had the knowledge of the absolute truth, and because the truth is all pervading, इस जगत स्थिति में व्यवस्था के लिए, because God is all pervading, omnipresent, omniscient and omnipotent, even then the world has a different process of its going on style. World has its own process. So though they are beyond worldly
paradise, yet they did all this because they had no objection. They celebrated every details of marriage ceremony according to the scriptures, and they did it. 神というものは永遠なるものですし、変わっていかないものなのですけれども、この世中というのはいろいろな段階を踏んでいろいろなものが、いろいろな段階というものがありますね。ですからこの結婚式のセレモニーというものをちゃんと聖典に書かれた通りに行うことに対して2人は何も反対する気持ちもなかったので、それに従って行いました。 तदनंतर धवल कल्प वृक्ष के वस्त्रों का परिधान कर वे दोनों कल्प वृक्ष के फल खाकर शास्त्रोक्त क्रम से विवाह की वेदी की ओर बढ़े गए। इधर इतने समय से विवाह के लिए उत्कंठित हो रहे उन दोनों का मानो प्रिय करने के लिए तत्काल ही भगवान भास्कर ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किया। अनंतर उनकी संध्या वंदन आदि विधि समाप्त हो गई। मंत्र जप अघमर्षण आदि भी उन्होंने कर लिया। इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाश मंडल में समस्त तारे भी आ धमके। It was the slow darkness was deepening. Darkness started growing night, so they uttered all the methodical ritual mantras and everything, and they celebrated that marriage ceremony with all the rules and regulations. 夜の来ると2人はすべてのマントラを唱え、この結婚を自分たちで祝福しました。 अनंतर उनकी संध्या वंदन आदि विधि समाप्त हो गई। मंत्र जप अघमर्षण आदि भी उन्होंने कर लिया। इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाश मंडल में समस्त तारे भी आ धमके। And to see the marriage ceremony of these peculiar pairs, all the stars and gods and goddesses, they assembled in the sky to see the fun. そしてそれには空からいろいろな神や女神たちがその結婚式に参列して楽しそうにしていました。 इधर स्त्री पुरुष के जोड़ों में प्रीति पैदा कराने वाली सखी त्रियामा रात्रि भी कुइयों के हास से युक्त हो तुषार समूह बरसाती हुई आ गई। एंड नाइट एडवांस्ड, जिस तरह आकाश नाइट एडवांस्ड, जिस तरह आकाश मंडल में ब्रह्मा जी ने इंद्र और सूर्य से संयुक्त ज्योतिष चक्र को योजना की है, उसी तरह मुनिवर कुंभ ने भी इधर शिखर पर अनेक जाति के रत्नों से दीपकों की योजना की। Just as the Creator Brahma created all these creatures,
systematically. So also the night was created by the Queen Chudala, means it is just flowery language of poet language. As if Chudala created that night beautiful with stars and all those gods and goddesses. 世界の創造者が全てを作ったように、その美しいシーンはチュララによって作られたものでありました。 And some beautiful lamps made up of diamond and jewels. 宝石で作られたランプが輝き、 रात्रि के आगमन पर स्त्री रूप धारण करने वाले कुंभ ने राजा को अनेक भूषणों से सजाया। उसे चंदन, अगरू और कपूर से मिलित केसर और कस्तूरी से हार, केयूर और कंकणों से, कल्पलता से उत्पादित वस्त्रों से, मालाओं के कारण उत्कृष्ट शोभा वाले रत्नगुच्छ आदि उत्तम आभूषणों से, विविध भूषणों के लिए योग्य कंठादि माल्याओं से, कल्पलताओं, फूलों से, बड़े बड़े अनेक रत्नों से, यह तथा चंद्र के सदृश कांतिमान चूड़ामणि से खूब सजा दिया. And Chudala, of course, she was a yogini. She had so much power, and she, out of his yogic power, and because she was a lady, so she knows how to beautify the place. She decorated everything, as well as the king also, with so many types of ornaments and flower garlands, etc. Everything. She arranged everything in a high standard. チュララ王妃は女性としての感性も持ち、美しくその場を飾り立てました。すべてが最高の美しさを持っていました。 Because she is arranging everything. It was her suggestion. So she had to arrange everything, whereas the king was just witnessing. それはチュララ王妃が創造者で、そして王はウィットネス、それを見たという、見る人、目撃者というような立場であったのです。 इतने ही समय में महामुनि कुंभ वधु रूप में परिणत हो गए। घन स्तन मंडल के भार से भरित और तत्क्षण ही विलासी हो गए। एंड बाय दिस टाइम चूड़ाला, द कुंभ मुनि, took the form of a beautiful lady and decorated her own body. そしてクマムニ、つまり王妃はとても美しい女性の体になり、そして彼女自身も美しく飾り立てました。 अनंतर उन्होंने विचारा कि मैं यह वधू अब बन गया, अब यह कामरूप वर को शरीर दे देना चाहिए और कालोचित कृत्य अवश्य कर देना चाहिए. So Chudala became the bridegroom and they completed the ceremony.
てその宴を完全に美しいものとして完成させました。So Chudala thought to herself, यह मैं कमनीय वधू हूँ और हृदयस्थ आप भर्ता के रूप में सामने अवस्थित हैं, अतः हे काम रूप आप आइए मुझे स्वीकार कीजिए, यह आपका अवसर है। यों मन में विचार करके सामने वन बेदी प्रवेश में अवस्थित उदीयमान आदित्य के सदृश तेजस्वी भर्ता को और काम की ओर रति के सदृश बढ़ गई। हे मानद, आपकी मैं मदनी का नाम की भार्या हूँ, आपके चरणों में अनुराग पूर्वक प्रणाम करती हूँ। So Chudala went to her husband and did salutations to him and said, "O my Lord, your wife's name is Madanika. I am Madanika." Madanika. で、シュララは王のところに行って、私のご主人様、私の名前はモダニカですと言いました。Another name for the wife of Madan, Madan, the god of lust, who controls the whole universe, is very powerful. The god of lust, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, दूसरा नाम है। ना, अरे कामदेव का एक नाम है, Cupid. Yes, with arrow and bow of flowers. He has the power to bewilder anybody's mind. He lives in the mind of everyone. So he controls the whole universe. Cupid. He is the god of lust and desires. So his wife's name is, there are many names, and Madanika is one of it. Chudala says to Sikhiddhaj, my name is Madanika. हे मानद, आपकी मैं मदनी का नाम की भार्या हूँ, आपके चरण में अनुराग पूर्वक प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर निर्दोष अंगों वाली तथा लज्जा से विनम्र मुख वाली उस मदनिका ने चंचल केश वाले मस्तक से अपने शोभ रहे पति को प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे स्वामीन, पहले मुझे अलंकारों से अलंकृत कीजिए, तदनंतर अग्नि प्रज्वलित कर शास्त्रोक्त प्रक्रिया से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। So Madanika asked the king to do all the rituals after marriage as per the scriptures narrates. Yes. 結婚が成立したので、モダニカは彼女の夫に聖典にあるいろいろなことを質問しました。
हे राजन, आप इस समय खूब सुंदर लग रहे हैं। मुझे काम पीड़ित कर रहे हैं। अधिक क्या कहूँ। रति के विवाह में प्रसिद्ध कामदेव का भी आपने अपनी शोभा से तिरस्कार कर आप स्थित हैं। Then she started praising the king. Praising the king. Glorifying. Glorifying. You are great, you are such and such. That. そして、彼女は自分の夫に、礼拝を始めました。 राजा की उक्त शोभा का ही वर्णन करते हैं। Now the poet goes on describing in the flowery language the beauty of the king. All this because the story should be interesting. हे राजन, आपके प्रसिद्ध जो ये मालाएं हैं वे इंदु की किरणों से मालूम पड़ती हैं और आपके गले का यह जो हार है वह मेरु पर्वत पर के गंगा प्रवाह की शोभा धारण कर रहा है। He went on, the Madanika, the wife, went on praising, admiring the beauty of the king. Oh, you look like your ornaments are dazzling like the soothing moonlit light, moonlit. And you are हे रूप मंदार पुष्पों से गुंथे गए केसों से आप ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे केसरों से युक्त चंचल भ्रमरों से सुवर्ण कमल शोभते हो। You look like the lotus full of the black bees singing around. हे प्रभु, रत्न किरणों कुसुमों तथा स्थिर तेजो लक्ष्मी के कारण आप रत्नों के स्थानभूत मेरु पर्वत का ही अतिक्रमण कर अवस्थित हैं। उस तरह के विविध वर्णन कर रहे हुए कुछ ही क्षण में होने वाले दंपति जिनका कि पहले से ही गुप्त दाम्पत्य था, एक दूसरे से अत्यंत संतुष्ट हो रहे थे। इधर सुवर्ण पत्थर के आसन पर बैठे हुए महाराज सिखध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खूब सजाया। तत्त विभूषण के आदि उपयोगी अंगों में समर्पित नानाविध अलंकारों से चमकीले मणि रत्न आदि विभूषणों से युक्त मालाओं से, वस्त्रों से, अंगरागों से तथा फूलों से वह कोमलांगी मददायिनी मदनिका विवाह के लिए उत्कंठित गिरिजा और काम की पत्नी कामिनी रति के सदृश शोभने लगे। And then the king also went on beautifying the body of Madanika, his wife.
उस तरह के विविध वर्णन कर रहे हैं। वे कुछ ही क्षण में होने वाले दंपति जिनका कि पहले से ही गुप्त दाम्पत्य था, एक दूसरे से अत्यंत संतुष्ट हो रहे थे। इधर सुवर्ण पत्थर के आसन पर बैठे हुए महाराज सिखिध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खूब सजाया। तत्तद विभूषण के आदि उपयोगों में समर्पित नानाविध अलंकारों से, चमकीले मणि रत्न आदि विभूषणों से युक्त मालाओं से इत्यादि सब सजाया। महारानी मदनिका को सजाकर महाराज सिखिध्वज ने कहा, हे मृग के बच्चों के सदृश नेत्रों वाली, अब तुम नवोत्पन्न लक्ष्मी की तरह शोभित हो रही हो। एंड देन द किंग Sikhidwas also in turn admiring the beauty of the wife. Oh, you look like Lakshmi, and this and that went on, glorifying her beauty. इंद्र के साथ इंद्राणी का जो सौभाग्य है, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का जो सौभाग्य है, शंभु के साथ गौरी का जो सौभाग्य है, वही सौभाग्य मेरे साथ तुम्हारा हो। Just as Lakshmi looks beautiful with Lord Vishnu, Parvati looks beautiful with the company of Lord Shiva, and Saraswati with Lord Brahma. So also you look so beautiful with me as my friend and power and my wife. そして王自身も新妻の美しさについて美しさを称え続けました。あなたの美しさは、ラクシミ女神のようであり、パールバティ女神のようであり、それからサラスバティ女神のようであり、それぞれの女神がそれぞれの神と一緒にいるように、私と一緒にいてくださって、私と一緒にいることであなたも本当に美しいというように、いつまでもいつまでも、新妻を称える言葉を続けていました。And then the king compares her with the wheel-fulfilling creeper, Kalpalatika. Kalpalata means the creeper which fulfills all your desires. The tree which fulfills all your desires is called Kalpataru, the tree, and Kalpalatika, the creeper, which fulfills all the desires of the worshipper. So the king says, you look like the creeper of fulfilling all the desires. Will fulfilling creeper which goes on the tree with support of the tree, grows. तुम उदित पूर्ण चंद्र की शोभा के सदृश हृष्ट होकर सुंदर आह्लाद दे रही हो। हे वरारोहे, अब चलो तुम स्वयं ही विवाह की वेदी की अलंकृत करो। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामभद्र,
तदनंतर उन दोनों ने वेदी में लगे हुए जो खंभे थे उन्हें फूल वाली लताओं से सजाया। उन लताओं में फलों के गुच्छों का तरह दिखाई पड़ने वाले हीरा, माणिक आदि नव तरह के रत्न पाषाणों के गुच्छे लगाए गए थे। उसकी चारों दिशाएं 4 नारियल के फलों से तथा गंगाजल से परिपूर्ण नवरचित 4 घड़ों से सुशोभित की गई थी। He is going on describing all the parts of the pandal where they have to sit and ceremony, rituals will go on. He is describing the beauty of that pandal. Yes. そのように、宴は続いていきました。The pandal has to, just as we decorated the pandal yesterday for your birthday ceremony, so also when some marriage ceremony goes on, they have to decorate the place, the pandal, the stage where they have to sit, and all the rituals will go on, and havan, etc. The そのように美しく飾られたところで宴はそのように続きました。 अरण्य में गौरी और शंकर की तरह परस्पर सुशोभित हो रहे मंगल स्वरूप उस दंपति ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। All these are the Indian type of marriage ceremony. They have to promise something to each other, and then they have to go round the fire place so that the fire will be witness, and they did all those. एक दूसरे को शरीर देने में उन्होंने एक दूसरे को दान क्या दिया। एक दूसरे के प्रेम के लिए लोलुप ज्ञान रूप सर्वोपरि धन से परिपूर्ण अपना अपना हृदय ही उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने दाय के रूप में दान दिया। एक दूसरे के प्रति किए गए स्मित हास से उनके कमनीय मुखमंडल में महती शोभा झलक रही थी। जस्ट पोइटिकल डिस्क्रिप्शन। उन्होंने अग्नि की पहले 3 प्रदक्षिणाएं की, फिर उसमें लाजा होम किया। उस वैवाहिक विधि से बराबर संतुष्ट होकर उस वरवधु ने एक दूसरे द्वारा ग्रहण किया गया अपना अपना हाथ छुड़ा लिया। उनके कांतिपूर्ण स्मित कर रहे मुख नवीन उदित हो चंद्रमा के सदृश लग रहे थे। अनंतर पहले से निर्मित नूतन फूलों के पलंग पर वे सोने के लिए चले गए। इसी बीच चंद्र ने आकाश तल से मानो उनकी शोभा निहारने के लिए धीरे धीरे रात्रि के चतुर्थ भाग पर आक्रमण किया। यानी वैवाहिक कृत्य करते करते रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत हो गया। इन दिस वे द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नाइट वाज पास्ट।
जैसे चपल कामुक जन की दृष्टि ललनाओं का छिद्र देखने के लिए एकांत में अपनी किरण फेंकती है, वैसे ही चपल चंद्रमा ने ललना का छिद्र देखने के लिए लता गृह में पुष्प सज्जा पर अपनी किरण फेंकी। अनंतर पूर्ण रूप से चंद्र के उदित हो जाने पर संगम के लिए पूर्ण शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोभित दंपति ने प्रसिद्ध नवीन वार्तालापों से स्वल्प समय तक विश्राम लिया। अनंतर उठकर उन दोनों प्रेमियों ने सुवर्णमय गुफा में, जिसमें कि चमकीले रत्न रूप दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया। उस गुफा का पहले से ही उन्होंने स्वयं निर्माण कर रखा था। वह इतनी गुप्त थी कि उसमें चंद्र की किरणों की गति भी नहीं हो सकती थी। प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहाँ पर कुसुम से बना हुआ एक नवीन पलंग देखा। वह चारों ओर खोदे गए सुवर्णमय कमलों से, दूसरे मंदार आदि अम्लान पुष्पों से सज्जा जितनी ऊंची होती है उतने ऊंचे सुंदर बराबर सजाए गए कुसुमों से, जो कि सज्जा के सदृश लंबे चंद्रबिंब के सदृश प्रतीत हो रहे थे और तुषार थली के सदृश शीतल थे, व्याप्त था। अधिक क्या कहें, वो सुंदर तल्प क्षीर सागर की जलधारा के सदृश धवल था। चंद्र ज्योत्सना के पिंड के समान सुंदर आह्लाद उत्पन्न करने वाला था। भीत में पड़ा हुआ कामदेव का मानो प्रतिबिंब ही था। उसमें सुगंध तो भरी पड़ी थी, यथा प्रमाण ऊंचा था, बड़ा ही रमणीय था, पूर्ण रूप से निर्मल। उस पुष्प राशि पर पलंग पर वह नवीन जोड़ा, जो कि राज छोड़ने के समय से लेकर अभी तक वह भ्रांति वश अपने को दंपति नहीं जान रहा था, बैठ गया। दोनों को समान रूप से सुखानुभव देने वाले उस पलंग पर वे क्षीर सागर में मंदराचल की तरह शोभ रहे थे। In this way, they just spent the night, everything in very details and beautifully described in flowery language. This language is most wonderful, with all the similes. It looked like, oh, the moon and the sun and other things like that, going on giving the examples and flowery language, just description of all those. भद्र परस्पर अनिर्वचनीय प्रेम भरी मनोहर उन वाणी के विलासों से तथा उस समय के लिए उचित आलिंगन आदि कृत्यों से सुहावने गंधमाल्य तांबुल के समर्पण आदि शुभ आचारों से जनित नवीन संभोग सुख से उसे निर्मल दंपति की लंबी वह रात मुहूर्त के सदृश बीत गई। 106 सर्ग समाप्त। In this way, they spent the whole night with joy and satisfaction. このようにして夜2人は喜びとそして満足のうちに過ごしておりました。
So, thus ended the 106th chapter. ここで106章が終わっています。 It is the only description of marriage ceremony. That's all. なんか106章はまあ結婚式の様子、セレモニーの様子だけでほとんど終わっています。 Though Chudala was very particular to see his mental condition, she was doing everything to its level best, so that in such atmosphere, in such because she was a yogini, by her yogic power she can create anything and everything. So that's how in that forest, in the top of the mountain and in the caves of those mountains, she was doing all these just for knowing how the king is feeling. All these. これらのことを彼女はずっと王様がどんな感覚でそれを捉えているかを見るために行っていたわけです。山の中、それから洞窟の中、そしてその結婚式の美しい場所。Gurudev gave a thermometer to measure the effect of meditation. Oh, effect of meditation, a meter. What is that? What is that meter? Measuring rod. Measuring unit, meter. What is that? Gurudev used to say, if one can meditate for 1 minute in true sense, mind gets steadied without any movement, without any other thoughts. For 1 minute, 60 seconds, for 7 days. For 7 days, no abnormal conditions can disturb his mind. No, for 1 week. もし1日1分間きちんと瞑想ができて、それを7日間、1週間続けることができたんだったら、要するに精神的ないろいろな問題などというものはみんな消えてしまうよとグルデヴはおっしゃいました。Mind gets so much steadiness, it gets never disturbed by any conditions around him. 1 minute meditation, such a tremendous power. 一つのことに集中して他のことに邪魔されない時間というものを持てば大きな力を持つことができるのですとグルデヴはおっしゃいました。And now, Sikhidhaj had the experience of samadhi for so long. Samadhi, not meditation, higher state than meditation. For 1 week, continuously, what will be his mental condition? Never to be disturbed by any such hallucination and all such temporary, you see, some attractions. His mind was never disturbed. 王は1週間もの間、ただの瞑想ではなくて、深いサマ
週間も浸っていたのですから、そのメンタルコンディション、その心の状態っていうのは非常に高い境地に入っていたわけです。ですからこの世の、普通の喜びとか普通の、アトラクションですね、そういった世俗的なことに対する心が動くようなことはもうなくなっていました。That was the motive to test his mind of Chudala the queen. Let me see whether he is well established in that state, or else again he will be disturbed by the ruling way of the kingdom, and if some enemies attack, some battle and other things, he will be disturbed. So let me test his mind first. That was the way to test his mental condition. チラは王のその高い境地が本当に確立されたものであるのかどうかを確認するためにいろいろなことを踏みかったわけです。もし彼が王宮に戻って王の世俗的な仕事、いろいろな世俗的なことに巻き込まれたとしても、それは変わらないだろうかということを確かめたかった。Now we shall see the 107th chapter. अनेक पर्वतों पर विहार राजा की अनासक्ति की परीक्षा के लिए माया से इंद्र दर्शन कराना तथा स्वर्ग को बुलाना आदि इन सब का वर्णन. Now in this chapter we shall see other persuasions, other taste. She created Indra, the king of gods. She created out of her magic power. And Indra invited our king, come to our heaven, and I am waiting for you to give you prestige, means to glorify you, to give you some big enjoyments. So please come to our heaven. In this way, to test his mind for different types of enjoyments in the heaven and other loka means the other different level of existence, higher level where one enjoys only bliss and bliss. So Chudala created some gods and the king of gods out of his yogic power. It was not real. And then she wants to test whether he has some desires for higher layer of existence, different swargas, heavens, enjoyments, whether he has some desire for it or not. That was to be tested in this. That is to be tested in this chapter. このチャプターの新しい章の中では、チララが王に新しいテストを試みます。それは彼女の、ヨギの力によって天国を作り出し、そこに王を招待するのです。次元の違う喜び、次元の違う美しさ、その天国の中で彼の心はどのように変わるのか、新たな望みとかあるいは新たな心というのが生まれてくるのか、彼女はそれを見たかったのです。So we can bring some examples. There will be, say,
our school exams or college exams, different papers, isn't it? Yes, and the first paper is over. Now the second paper. それはちょうど学校で試験を受けるときに、近づくだけじゃなくて、一つ目のテストが終わったら、次またちょっと違うテストを受けたりしなくちゃならないこともありますよね。そのように、まず1枚目で丸をもらったら、今度2枚目の問題用紙がやってきたわけです。The examiner, he is sitting in the exam hall with the students to test how these students are doing, whether they are copying or they are really answering the paper or not. He is sitting with the students in disguise. 試験の監督官が、受験生と一緒に座って、みんながちゃんと解いているのと見ているようなものです。This is how the teachers do sometimes. Shall I tell you a story for a little tea break? Stories within the stories. I was studying in 6th standard. I was a small boy, say by of 12 or 13, that's all. Even less. And I was so smart in answering the mathematical questions. In mathematics, I used to keep 100%. The moment teacher will write some questions on the blackboard, my answer is ready. Because I know the process. So only multiplying or dividing or adding or deducting, that is all. So I answer it so easily and so quickly. Others they cannot. I used to secure 100% marks in mathematics. So one day it so happened our mathematics teacher was explaining some methods, a new chapter in mathematics, and everybody was looking at the blackboard. I also was listening attentively. And then the teacher asked, "Did you follow, all of you students?" Everybody said, "Yes, sir, we have understood. Now I shall give you 5 questions. You have to answer by yourself in same method." Yes, sir. So Guruji, teacher, went on writing 5 questions out of his mind. So the moment he has finished the 5 questions writing on the blackboard, I have answered it. And the teacher said, "You have to keep the notebook on your table, keeping upset, and I shall come. I am going outside. I shall come and see all the. Don't talk, don't make noise, and do the work. I am coming." The teacher went out from the class. Everybody thought he has gone.
but he comes from the behind. And he comes from behind, and in the end, behind everyone, nobody knows. He is looking and observing in everyone what all doing. I was sitting on the front line, and my friend is sitting near me. He is unable to do, poor fellow. So I was sitting straight and I was looking towards the friend, and slowly, very silently whispered to the friend, "Don't do like that, don't do like that, that is wrong. Rub it out and do like this." I was helping him. I was whispering very slowly, and by the time the teacher has come and stood behind us, just behind our bench, we don't know, because we have to make no noise. He told, if there will be noise, teacher will come and punish us. So I was sitting just straight. Don't do like that. Oi. You are doing something wrong. Do like this, do like that. I was helping him, and the teacher came from behind and front side, caught my ear and gave a beautiful slap. My head was not able to bring front. It was remaining for 5 minutes like that. I could not weep even. It was such a slap. Then he warned us, "You foolish boys, what for I am here? You don't know? I am here to teach you. I know what to teach at what time. If you help him, you are obstructing his mind to work properly. You should not let his mind work, then only he will learn. How you can understand what a teacher does? Don't do a teacher's job, or else you will be well punished." From that day onwards, even some students ask me to help, I never did it. Never. Let it go to hell. Come on. 今津波寺の小学校6年6学年ぐらいの時の話なんですけど、さっき申し上げたようにとても数学ができる少年だったので、ある時、新しい、数学の方やる解き方というのを先生が教えてくれました。そしてその時またその解き方を使ってこの問題を解いておきなさいと言って5つの問題を書くと、先生はちょっと外に出てくるからその間ちゃんと解いておくんですよと言いました。その時にはもうスワミジは解き終わっちゃっていたので、先生はもう書いたノートは伏せて、他の人に見えないように伏せて、黙って座ってなさいとスワミジには言いました。ところが先生はですね、外に出てるとか言いながら後ろからこっそり回って生徒たちの様子を見てたんですね。でスワミジは一番前の席に座っていたんですが、スワミジの隣にいた少年は数学がとても苦手で、もうこうやって横目で見てるとちっとも解けないし、変な時もうすごい間違った答えばっかり書いてるので、スワミジは違うそこでそうじゃなくてそこのとこそこのとこっていう感じで小さい声で彼に教えてたんですね。でそうこうしてるうちに後ろの方から先生がやってきて、ちょうどスワミジの横に来た時にもスワミジは気がつかなかったわけです。でその時先生はスワミジの耳を、よくね今こ
子供を叱るとき耳を引っ張ったりするんですけど、インドでは。つまみ指をグイッて引っ張って、ガシーンとしばらくその打たれた方向から首が戻せないぐらいきついパッシリピンタをスワミジは食らってしまいました。そして先生が言うには Never again thereafter. もうお前が教えてしまうとね、この隣でしょうね、この子はね、自分の頭で考えるというチャンスがなくなるだろう。それをね、どうやって考えたらいいか教えるのがね、教師の仕事なんだ。今お前はね、教師の仕事をしてはいけないと言って、その水は叱られてしまいました。教師というのは時々そのように、生徒を指導します。それ以来、自分は誰かに頼まれても絶対にもう教えてあげないことにしました。You are also being tested. Don't forget. You are under examination. みんな試験中なんだよ。忘れちゃダメだよ。Don't forget. It is not only I who take the test, interview, but the nature takes the interview every moment. Don't forget it. 自然はね、エブリモーメント、この一瞬一瞬にちゃんと私たちテストしてるんだよ。忘れちゃダメだよ。みんな試験中なんだよ。The world is nothing but a school, an exam hall. 人生というのはずっとね、試験会場にいるようなもんだからね。Every moment get ready to give interview. いつだってちゃんと試験を受けられるように試験を受けているようなつもりで、いつだって試験を受けられるようにして生きていってくださいね。And it is never ending also. そして終わりのない試験だから。Till the end of last breath of your life, you have to give interview. Don't forget this. Every moment you are under interview. この一瞬一瞬で私たちは試験を受けてるんですよ。You are under surveillance of CCTV. CCTV. いやいやいや、Every moment, everything is open. See, there is the CCTV. Yes. In a hospital also it is there. I sit in my office. I observe everything, what is going on in the whole ashram, who is doing what. My dear, of course there is no CCTV in your rooms. No, don't be afraid. You can sleep whole night without doing any yogic sadhana. You can sleep, nobody will see you. So this is how Chudala is testing his mind seriously.
and the king is not aware of it. こちらがそのように王を That is the beauty. 王はそれにちっとも気がついていません。 In this chapter we shall see the second paper. Now it is desire for higher pleasures. First the lust was tested, then desires, and then greediness, everything will be, all the bad qualities of the mind has to be tested so that he is well established in the real life, reality. 第二試験に入っていきます。何か欲望が残っているのでしょうか。महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, रात बीत जाने के बाद जबकि प्रभात में अंशुमाली सूर्य के लाल रंग ने समस्त वन का कोना कोना रंग दिया, तब सिखध्वज की भार्या मदनिका अपने पहले के कुंभ रूप में आ गई. Now the Guru Vasistha says, O Ram, when the night passed, then there was sunrise, and everywhere there was bright sunlight spread all over the earth. Then Madanika, the queen, became Kumbha, the male body. Next morning, श्री राम जी, मैंने आपसे जैसे कहा वैसे वे दोनों कुंभ और सिखध्वज स्वतः विवाहित हो गए और देवताओं के सदृश भोग सामग्री से पूर्ण होने के कारण वे प्रिय देव दंपति ही बन गए. Vasistha ji is explaining to Ram, O Ram, both those great personalities, because they had all the powers and they had no choice for any enjoyments, yet they were looking like the gods in the heaven and celestial friends, heavenly friends, beings. そこでバシスタがラムに語りました。この二人は立派な偉大な心を持っている。何でもできるんだけれども、きちんと神の摂理に従って過ごしている。Though they had no desires to enjoy, yet they had all the objects of enjoyments. 彼らには特別に欲望というものはないのだけれども、その何か欲望というものに対して別に否定もしていない。प्रतिदिन ऐसे ही चित्र विचित्र वन पंक्तियों में विलास करते थे, जहाँ की पके पके फलों के समूह भरे पड़े रहते थे और पल्लवों की अनोखी शोभा निखरती रहती थी. So both of them spent time in beautiful forest gardens where the fruit trees were full of ripe and sweet fruits, and flower gardens were full of smelly flowers. They enjoyed the nature for a long time. Yes. 彼らは美しい森に住み、美しい花
なるところに住み、それらのものをちゃんと楽しんでいる。 दिन में तो वे अत्यंत प्रिय मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पति पत्नी बन जाते थे। प्रभा और दीपक की तरह इतने वे मिले जुले थे कि कभी अलग होते ही नहीं थे। They were friends in the daytime and husband and wife at night time, and they were so close to each other, it assumed as if the fire and its glow, the brightness, 彼らは夜は夫婦として過ごし、 not separable. 昼は男同士として一緒に暮らしている。そして彼らは光とそれから火とそれからその明かりのように二つにもう分かつことができないほど一つになっているのだというふうに言いました。 उन्होंने अरण्य के कुंजों में, पर्वतों की गुफाओं में, मंदार वृक्षों से अति गहन घने तमार वृक्षों की झाड़ियों में, सह्याद्री, कैलाश, महेंद्र, मलय, गंधमादन, विंध्याचल तथा लोकालोक पर्वत और नदियों के तटों में रमण किया। They went on roaming about in different beautiful mountains and forests and different beautiful river banks. They went on roaming about happily. そして二人は美しい森から森へ、そして美しい川べりから川べりへ、美しい野花園から花園へというようにあちらこちら、移動していきました。 3 दिन बीत जाने के बाद जबकि उसके पति निद्रा ले रहे थे, तब वह चूड़ाला अपने नगर की ओर जाकर वहाँ राजकार्यों का संपादन कर फिर वापस आ गई। The queen was aware of the governing in the kingdom, governing system. So one day when the king Sivanand was asleep, Chudala silently went away to the capital and she arranged everything in the ruling ways, and then again she returned back. 大きな寝ている間に王宮に戻り、王宮での仕事、政治的な仕事などを済ませて、また王のところに戻ってくるということまでしていました。 वे कुंभ और सिखध्वज जो दिन में स्वच्छ हृदय मित्र और रात के प्रिय पति पत्नी थे, अनेक तरह के पुष्पों से मालित होकर परस्पर अत्यंत मुदित रहते थे। किस किस स्थान में कितने कितने समय तक वे रहे, यह बतलाते हैं। महीने भर तो उन्होंने महेंद्र पर्वत के ऊपर के गुफा घर में निवास किया। वह घर अत्यंत रमणीय था। उसके चारों ओर चीड़ के ऊंचे वृक्ष लगे थे। उसकी दीवारों रत्नशिलाओं की बनी थी। वहाँ पर देवता और किन्नर उनका आगत स्वागत खूब किया करते थे। Now he is explaining how long and in which mountains and lakes and rivers, how much time they spent,
happily without any difference between both of them. They spent a long time in this way, roaming here and there, enjoying the nature. उसके बाद उन्होंने yes. So why shall we disturb them? Let them enjoy. Okay, tomorrow we shall see. Yes. When you go to Gangotri Hills Yes. for enjoyment. Thank you. Thank you. Natural, nature's beauty. Yes. You can enjoy and let these pair Yes. friends as well as husband and wife, so let them enjoy the nature's beauty. Okay? Yes. Till Sure. you come back. Yes, sure. Okay? この夫婦に大自然の喜びと美しさを味わわせている間に、皆様もではガンゴドリに行ってガンゴドリの自然を味わってきてください。ということで。Next we shall see afterwards. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnata Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasisate Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Jogavasirji Bhagavan ki jai. Hari Om.